We're going to discuss a numerical problem of chapter 2. We are going to discuss the 3 numerical problems that are included in your homework for today. So the first one is a squash ball makes contact with a squash racket and changes velocity from 15 meters per second west to 25 meters per second east. It means that पहले जो squash ball है that was going with 15 meters per second towards west. So this was the velocity of that squash ball, which was 15 meters per second. This was the initial velocity, right? After striking the squash racket, it changes its velocity and starts going with 25 meters per second towards east. Okay, initially it was going towards west, and after striking the racket it starts going towards east. Initial velocity was 15 meters per second and final velocity becomes 25 meters per second. Remember that इस केस में velocity initial velocity is towards the west, and after striking the racket it becomes towards the east. Okay, so it means that now we are dealing with two opposite velocities which are acting totally in opposite directions. Therefore we have to include a negative sign with either of these velocities. ठीक है, so इनमें से किसी एक velocity के साथ नेगेटिव साइन इंक्लूड करेंगे. ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस ये है कि स्मॉलर जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसके साथ नेगेटिव वैल्यू प्लेस की जाए, ताकि हमारे पास फाइनल आंसर जो आए उसके साथ नेगेटिव साइन ना आए, राइट. सो इन दिस केस वी हैव टू प्लेस अ नेगेटिव साइन विद 15 मीटर्स पर सेकेंड. ये नेगेटिव साइन किसको शो करता है? जस्ट कि वी एफ एंड वी आई आर opposite in direction. Vi is towards the left and Vf is towards the right, or Vi is towards the west and Vf is towards east, right? So therefore initial velocity Vi becomes equal to minus 15 meters per second and final velocity becomes 25 meters per second in 0.10 seconds. So time becomes 0.10 seconds. We have to find out acceleration. The formula that we are going to use is A equals to Vf minus Vi by T. So we don't really have to do anything except just putting the values in our required formula. Okay, so Vf की जगह हम लोग 25 meters per second प्लेस करेंगे, माइनस विच इज़ इन द फॉर्मूला. Vi की जिसकी वैल्यू -15 है, so we have to place this value in brackets, right? So as we know that this minus sign would get multiplied by the minus with the 15, and 25 minus it would give you plus 15 divided by 0.10. ये वैसे ही रहेगा. 25 plus 15 would give you 40. 40 divided by 0.10, so it will give you 40 divided by 0.10 would be 400 meters per second, and that is your required acceleration. But remember that you have to mention the direction as well. 400 meters per second square, ये तो हमें मिल गया, that was the magnitude. But हमें direction क्या मिलेगी? Of course this acceleration will be towards east, because final velocity towards east है, therefore the final acceleration would also be towards east, right? Problem number 2 is a golf ball that is initially traveling with 25 meters per second, right? So initial velocity is 25 meters per second, hits a sand trap and slows down with an acceleration of minus 20 meters per second. Acceleration becomes minus 20 meters per second. Minus means that this acceleration is actually the deceleration. यानी इसकी velocity with respect to time कम होती जाएगी. And find its displacement after the 2 seconds. So we have time t equals to 2 seconds, and we have to find out the displacement, right? So we have initial velocity, acceleration, and time, and we are going to find out the displacement. The formula that we are going to use is S equals to VIT plus half AT square, right? So we just have to place the values again. Vi was 25, t was 2 seconds, plus half into a was minus 20. Remember to mention the negative sign, right? Because this is deceleration, this is not acceleration. Into t square, which is 2 whole square. 25 multiplied by 2 would give you 50, plus ये वैसे ही रहेगा, half 20, ये भी वैसे ही रहेगा, just
2 स्क्वायर को हम लोग ओपन करके लिख लेंगे. आफ्टर दैट 50 वैसे ही रहेगा, राइट, प्लस हाफ 20 into 4 it would give you 80. 80 divided by 2 and 80 हमारे पास कट हो जाएंगे. So 2 2 fours are 8 आ जाएगा, 0 वैसे ही रहेगा. So 2 40s are 80 of course, right? Therefore 50 वैसे ही रहेगा, plus 1 into minus 40 would give you minus 40. Remember to write it in brackets. ये माइनस साइन 40 के साथ है, राइट, ये प्लस साइन फिलहाल वैसे ही रहेगा. Therefore 50 plus minus it would give you minus 40. 50 minus 40 will give you 10 meters. Of course we have to mention the unit here as well. अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे देन आपके आंसर के हाफ मार्क्स कट जाएंगे, राइट. सो रिमेंबर टू ऑलवेज मेंशन द यूनिट्स एज वेल. Problem number 3 is a bullet accelerates at the length of the barrel of a gun. Okay, so let's suppose we have a gun. Okay, like this. So a bullet accelerates the length of the barrel of the gun. यहाँ से इस barrel से लेकर इस end point तक ये bullet accelerate हुई. The question is that the bullet starts from this point and accelerates till the end of the gun, right? And this distance is 0.750 meters. A meter long with a magnitude of 5.35 into 10 raised to power 5 meters per second square, right? So this magnitude of acceleration is actually 5.35 into 10 raised to power 5 meters per second square, right? So we have initial velocity, which is 0. Remember that before starting its journey, the bullet was at rest, so pi would become 0. Distance is equals to 0.750 meters, and acceleration is equal to 5.35 into 10 raised to power 5 meters per second square. ये vi हमने खुद से क्यों लिया? Because we know that before firing the bullet was actually in a state of rest, so its initial velocity would become equal to 0, and you have to find out with what speed does the bullet exit the barrel, right? So in this case we have to find out the not displacement, actually we have to find out the final velocity. Okay, the formula that we are going to use is 2as equals to vf square minus vi square, right? So here we are not required to find out any acceleration or displacement. What do we need to find? We have to find out this vf. So vf को एक ही जगह रखेंगे, vi को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे. रिमेंबर दैट जो भी क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है उसे इक्वल के एक साइड पर रखें और बाकी सब क्वांटिटीज़ को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएं ताकि कैलकुलेट करना आसान हो. इन दिस केस वी एफ हमने फाइंड करना है, उसके साथ माइनस वी आई एक्स्ट्रा है, सो माइनस वी आई को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इट विल बिकम प्लस वी आई. सो वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2as प्लस वी आई स्क्वायर, राइट. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक 2as प्लस वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, राइट. आप इस स्टेप से पहले ये भी लिख सकते हैं इफ़ यू अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो. सो 2s के साथ प्लस वी आई स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू दूसरी साइड पर वी एफ स्क्वायर आ जाएगा. नाउ वी जस्ट हैव टू सिंपली प्लेस द वैल्यूज़. 2 फॉर्मूले वाला एक ही जगह है, दैट इज़ द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 5.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. तो एक्सेलरेशन की जगह 5.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 डाल दिया. डिस्टेंस इज 0.750, उसे यहाँ पर प्लेस कर दिया. रिमेंबर दैट ए एंड एस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यू डोंट हैव टू मेंशन एनी प्लस और माइनस साइन, ठीक है. सो अगर आप ब्रैकेट्स को डायरेक्टली लिख रहे हैं इट मीन्स दैट दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय वन अनदर. प्लस वी आई एज वी ऑलरेडी नो इट्स 0, सो 0 का स्क्वायर आगे चल के वैसे भी 0 हो जाएगा. नाउ इज़ द थिंग, यहाँ पर जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिमेंबर दैट साइंटिफिक नोटेशन में जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 को n रेज़ टू पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज इंटीजर्स. ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद द मेंटिसा ऑफ दिस साइंटिफिक फिगर, राइट. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.35 multiplied by
0.750. So 2 into 5.35 into 0.750 will give you 8.025 multiplied by 10 raised to power 5 वैसे ही रहेगा, right? प्लस ये ऊपर वाला 0, so ये एड अप होकर वो वैल्यू अगेन दोबारा आ जाएगी 8.025 into 10 raised to power 5 plus 0 will give you that exact value again. Now, remember that this is not the value that we need to find. We have to find out VF, not VF square. So we have to take square root on both sides. Taking square root on both sides, दोनों साइड्स पर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे. वी नो दैट जब भी हमारे पास स्क्वायर हो एंड अंडर रूट हो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो वी का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे एंड वी एफ हमारे पास वैसे ही रह जाएगा. ऑल्सो 8.025 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा. इसका अंडर रूट डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो सकता. सो अब हम इसे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं. रिमेंबर दैट अंडर रूट 10 रेज़ टू पावर 5 डायरेक्टली कैंसिल तो नहीं हो सकता. सो इसे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि इसी कैलकुलेशन हो सके. सो yes, definitely this is an odd number and odd number अंडर रूट के साथ कैंसिल नहीं होते. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इवन नंबर. ठीक है. सो इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स द राइट लेकर जाते हैं, इट मीन्स नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 रेज़ टू द पावर -1. हमने एक जंप की टूवर्ड्स द राइट. इट मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 1 और 1 कौन से साइन के साथ? माइनस साइन के साथ, बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट. सो वी हैव टू राइट -1. It would become 80 point, अब पॉइंट यहाँ पर आ गया 0.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1. ये -1 कहाँ से आया? बिकॉज हमने एक जंप टूवर्ड द राइट की. मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 ऊपर वाला. सो 80.25 इंटू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. सो इट वुड गिव यू 10 रेज़ टू पावर 5 -1 which is equal to under root 80.25 into 5 minus 1 10 raised to the power 4 यहाँ तक आ गया. right? Also remember that जब भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हो तो हम उसके मेंटिसा को और उसके 10 raised to power anything को अलग अलग करके मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. so 80.25 अंडर रूट सेपरेटली लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 4 अंडर रूट सेपरेटली लिख दिया. 80.25 अगेन वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाइड बाय हमने क्या किया 10 रेज़ टू द पावर 4 को 10 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख दिया. इट मीन्स मैंने इसकी पावर को स्प्लिट कर दिया. स्प्लिट इसलिए किया ताकि आगे चलकर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो सके. ओके, ऑफ कोर्स मैं इसे लिख सकती हूँ, ये हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 4 है, मैं लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू ये सारा हमारे पास ब्रैकेट में आ गया होल पावर 2. सो अगेन 2 इंटू 2 ये 4 ही बनेगा. सो इट मीन्स दैट दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन इज पॉसिबल. सो अंडर रूट 10 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 2, ये 2 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट अंडर रूट 80.25. इसका जब आप अंडर रूट फाइंड करेंगे यू विल गेट 80.958 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 रह जाएगा, बिकॉज ये वाला 2 बाहर वाला 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो चुका है. ओके, इसका अंडर रूट हमने कैलकुलेटर से फाइंड कर लिया और इसका अंडर रूट हमने कैंसिल आउट करके लिख दिया. रिमेंबर दैट 80.958 हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एंड वी वांट टू राइट इट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस. सो मैंने यहाँ पर अगर करके लिखना है, इट मीन्स दैट this is the drop off number or the dropping number. So dropping number हमारे पास greater than 5 है. It means we have to add 1 to 5. So it would become 8.96 into 10 raised to power 2. Now for further simplification we would get, अगर हम कहते हैं कि 8 ये 10 raised to power 2 को हम ख़त्म करते हैं, क्या हम कर सकते हैं? Of course 10 raised to power 2 को solve करेंगे. It means that we have to make 2 jumps in the positive direction. This is actually plus 2. So we have to jump 1, 2 times in the positive direction. So 10 raised to power 2 को solve करने के बाद ये आ जाएगा 1, 2, 896. अब पॉइंट यहाँ पर आ गया. So it becomes 896 meters per second. Remember that ये जम्प्स करने के बाद 10 रेज़ टू द पावर 2 ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज इसको हमने सॉल्व करके डेसिमल पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया. राइट, 896
Meters per second is your final velocity, right? And if you face any problem solving these, do let me know, on WhatsApp or on Teams. Thank you so much, everyone.